हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब, है ना। आज का जो टॉपिक है मैराथन दौड़ में, जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, जो भी टॉपिक्स आज देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन को। ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक है आपका वेव प्रोपागेशन से। क्योंकि आपका वेव प्रोपागेशन अगर अच्छे से क्लियर है तभी ट्रांसमिशन लाइन आपका क्लियर होगा, है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाने से पहले मैं वेव प्रोपागेशन थोड़ा सा देखेंगे। वेव प्रोपागेशन को बहुत ज्यादा वेव प्रोपागेशन नहीं है ना। तो देखेंगे सबसे पहले वेव प्रोपागेशन में कि क्या है आपका वेव प्रोपागेशन, क्यों पढ़ते हैं वेव प्रोपागेशन को, एंड क्या रीजन आया आपका ट्रांसमिशन लाइन का। तो ट्रांसमिशन लाइन होने का क्या रीजन है, क्यों आया ट्रांसमिशन लाइन, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, राइट। तो दिस इज योर नथिंग बट, यहाँ पे जो है सिस्टम की जो रिस्पॉन्स है, सो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है आपका, इसके बारे में भी हम देखेंगे, राइट। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा पूछा जाता है ट्रांसमिशन लाइन से। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके ट्रांसमिशन लाइन से जो होते हैं वो 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे। कभी एटलीस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं ट्रांसमिशन लाइन से। एटलीस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो ही बनता है, उससे कम के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके ट्रांसमिशन लाइन से। सो सर वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन में क्या करते थे हम? सर अगर आप वेव प्रोपगेशन पढ़े होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि जो वेव है वो दो तरह के से प्रोपगेट किसी मीडियम के थ्रू, है ना। Before starting the topics, myself, Sushil Pashaman, pass out from IIT Roorkee. I have cleared the 3 times engineering services. Again, I am going for the interview of 2020 IES. So this is the consecutive 18, 19 or 2020. And I have 9 year experience for the teaching of the GATE and engineering services. चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं लोग कि वेव प्रोपगेशन का जो फील्ड है, ये वेव प्रोपगेशन में क्या करते थे सर हम। सर आपको पता होगा कि वेव प्रोपगेशन में हम एक लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक लेते हैं आप क्या, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई कंपोनेंट एंड एच कंपोनेंट, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। सो ई कंपोनेंट एंड एच कंपोनेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, है ना। तो वहां पर वेव पे आप पढ़े होंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे मान लिया ये आपका 3 डायमेंशनल है, दिस इज ए एक्स, let's say this is ax, let's say this is ay, let's say this is az, then let's say this is the direction of electric field, let's say this is the magnetic field, then this is nothing but your direction of the wave, direction of the wave. अब ये वेव जो है वो किस तरह से प्रोपगेट करता है, वेव किस तरह से प्रोपगेट करता है, इसकी बात हम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है आपका, एक्स डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, आप वाई डायरेक्शन में है। तो वेव कहां प्रोपगेट किया आपका, जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट किया, नहीं। चलिए, सो ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच, एंड दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। दिस विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव देता है आपका, है ना। चलिए, इसको और अच्छे तरीके से हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड में लेकर के। देखिए वेव कैसे प्रोपगेट करेगा। जैसे मान लिया ये कंपोनेंट आपके क्या थे सर, आपके कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आपके थे सर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड along the ax direction, this is your magnetic field along the ay direction, and this is your az, direction of propagation of wave, प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना। चलो, अब इसमें क्या क्या करते थे हम कि कंपोनेंट जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, दिस इज नथिंग बट ई क्रॉस एच, क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग सर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, एंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म्स द प्लेन, एक फॉर्म करता है प्लेन का, है ना, फॉर्म्स द प्लेन, एंड दिस प्लेन इज प्रोपगेटेड, दिस प्लेन इज प्रोपगेटेड। यही प्लेन आपका क्या करता है सर, आपका प्रोपगेट करना स्टार्ट करता है। दिस प्लेन इज प्रोपगेटेड, सो द ई क्रॉस एच forms the plane, and this plane is propagated. And what are the direction of the plane of wave propagation?
सो सर डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोपगेशन होगा जिस डायरेक्शन में एक्स, देखो एक्स के डायरेक्शन में क्या है सर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एच के डायरेक्शन में है। सर आपका एजेड डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, राइट। तो जो वेव का फॉर्मेशन होता है, जो वेव का प्रोपगेशन होता है, वो क्या करता है, एक एनवेलप का फॉर्मेशन करता है। कैसा फॉर्मेशन करता है सर, आपका एक एनवेलप का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको याद होगा पहले जमाने में लोग चिट्ठी लिखा करते थे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, नहीं, और चिट्ठी को भैया भेजता कौन था, पहले कबूतर, नहीं, उसके बाद फिर क्या आया, डाकिया आया, फिर पोस्टमैन, पोस्टमैन के बाद जो है उसके बाद ईमेल, है ना, अभी आप डायरेक्टली सेंड करते हैं जो भी है व्हाट्सएप। तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, this source of information is nothing but forms the plane of propagation, and this source of information contains the electric field component as well as magnetic field component। और यही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपका ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब क्या करते हैं आप, देखिए ध्यान से, पहले जमाने में आप क्या करते थे, आप लेटर लिखते थे, और जब लेटर लिखते थे, लेटर को सेंड करना है तो ऑब्वियस है क्या करते थे, एक बॉक्स लेते थे, लेटर बॉक्स, इसमें एनवेलप, इसको क्या बोलते थे हम, एनवेलप। और यही एनवेलप को क्या करते थे आप, जाकर के पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे, और ये आपका ट्रांसमिट हो जाता था। इंफॉर्मेशन जो भी आप लिखे ट्रांसमिट हो गया। सर आप पहले तो ट्रांसमिट नहीं करते थे, सेम एज इट इज, वट एवर योर इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट कंटेंट in the form of electric field as well as in the form of magnetic field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है और किसके फॉर्म में है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लिए, एक प्लेन का फॉर्मेशन कर लिया, और ये जो प्लेन है एनवेलप के फॉर्म में ट्रांसमिट होना स्टार्ट किया। तो सर डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे, तो सर पता है आपको, ax क्रॉस ay इक्वल टू व्हाट, az क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट ax ay, दिस इज az। आगे चलते रहेंगे, नहीं, आगे लेते चले जाना है। ax क्रॉस ay इक्वल टू व्हाट, az, az क्रॉस ax इक्वल टू व्हाट, ay। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्रॉस ay az एंड ay क्रॉस az इक्वल टू कितना, ax, एंड az क्रॉस ax इक्वल टू व्हाट, ay। सो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा है। क्या ले रहा है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा है। सो दिस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ट्रांसमिटेड एंड दिस इज नथिंग बट प्लेन ऑफ प्रोपगेशन। नाउ ये क्या था सर आपका, ये गाइडेड मीडियम नहीं था, ये कैसा था आपका, अनगाइडेड मीडियम था। ये मीडियम के थ्रू तो ट्रांसमिट कर रहा है, बट ये मीडियम आपका गाइडेड नहीं है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को गाइडेड मीडियम में अगर हम ट्रांसमिट करेंगे, इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन in the terms of the guided medium, if you want to transmit the source of information in the guided medium, so this guided medium comes into the picture, and which is nothing but two wire transmission line। इसी को क्या बोले हम, two wire transmission line। अब ट्रांसमिशन लाइन क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइन भी भैया आपका क्या क्या है सर, तो ट्रांसमिशन लाइन आपका क्या क्या है सर, एक तो हो सकता है टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा क्या हो सकता है सर, ये हो गया आपका टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। सर दूसरा क्या हो सकता है, वो एक्सियल केबल हो सकता है, यस कोएक्सियल केबल हो सकता है, सर सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। तो ये सब जितने भी कोएक्सियल केबल क्या सिलिंड्रिकल ही तो है। तो इसी को बोलते हैं हम एक गाइडेड मीडियम दे दिया गया, और इसीलिए हम पढ़ते हैं क्या, ट्रांसमिशन लाइन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन लाइन। अब बोलोगे सर कि अनगाइडेड मीडियम से जब ट्रांसमिट कर रहे थे तो ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, व्हाई रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो ट्रांसमिशन लाइन का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा गया क्योंकि एक हाई फ्रीक्वेंसी पर जाने के बाद लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा कि लॉसेस को कम करेंगे, फिर ट्रांसमिशन लाइन में देखिएगा फिर से लॉसेस ऑकर्स होंगे, और यही आपका कम करेगा कौन, जाकर के आगे चल के वेवगाइड। कौन सा करेगा, वेवगाइड। तो यहाँ पर हम इसलिए पढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या पढ़ते हैं सर, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो था अनगाइडेड मीडियम में जो इलेक्ट्रॉन, आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे वो किसके फॉर्म में थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में था। यहाँ पर हम ट्रांसमिशन लाइन में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेंगे इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज और इन टर्म्स ऑफ
एंड दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, चलिए अब ट्रांसमिशन लाइन के जो कंपोनेंट्स है, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। चलिए, अब अगर किसी मीडियम से हम ट्रांसमिट करेंगे, तो मीडियम से अगर ट्रांसमिट करेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। मीडियम से अगर हम ट्रांसमिट करेंगे देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके क्या होंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं, राइट। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मीडियम, टाइप्स ऑफ द मीडियम क्या होंगे एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मीडियम। सो मीडियम डिपेंड्स ऑन द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स एंड दिस इज नथिंग बट योर sigma, mu and epsilon. These are the three parameters on which the mediums are depends, right? So first of all, what are the types of the medium? So first types of the medium is your nothing but free space, right? So free space is nothing but your air medium. Free space is nothing but your air medium. And for the air medium, as you know that for the air medium, what's the value of mu r? This is equal to 1. What's the value of epsilon r? This is equal to 1, right? So for the dielectric medium, as you know that sigma is nothing but 0. There is no any conductivity. That's why the dielectric medium is nothing but sigma equal to 0. So the free space and the lossless dielectric, both mediums are considered to be a free space having the no any conductivity parameters. That's why here consider sigma equal to 0. So you can say that the free space is the special case of your lossless dielectric. So free space is nothing but your special case of lossless dielectric, in which the dielectric in the dielectric medium epsilon r is greater than 1, mu r is greater than 1, but for the air medium the mu r equal to 1 and epsilon r equal to 1. That's the difference between your free space and lossless dielectric medium, right? So both are same, both are same, but the slight difference is in the free space having the mu r equal to 1, epsilon r equal to 1, but in lossless dielectric medium having epsilon r greater than 1 and mu r greater than 1, right? Now come to the point for the lossy dielectrics. So what are the conditions for the lossy dielectrics? So for the lossy dielectrics, sigma not equal to 0, sigma not equal to 0. So what represent this sigma? Sigma is nothing but your conductivity. This sigma is nothing but your conductivity, and conductivity is what? How many free electrons or free carriers are present through any conductors, that will defined by the conductivity. So here the conductivity is nothing but not equal to 0, so having some conducting parameters. So the lossy dielectric is nothing but above the dielectrics medium. So you can say having the conductivity parameters. कुछ ना कुछ conductivity है, कुछ ना कुछ electrons है या कुछ ना कुछ conductors है जिसकी conductivity बहुत ज्यादा नहीं but बहुत कम भी नहीं है. So you can say you can relate with semiconductor materials, right? So just as like your lossy dielectrics having the sigma not equal to 0, but sigma is not greater than 1. Sigma is approximately equal to 1, right? So in that case, for the lossy dielectric case, epsilon r should be greater than 1, mu r should be greater than 1, and sigma not equal to 0. And from that medium, if sigma not equal to 0, mu r greater than 1, epsilon r greater than 1, and that particular medium is called lossy dielectric medium. इसी को क्या बोलेंगे हम? Lossy dielectrics medium. Now come to the point of good conductors. What do you mean by conductors and good conductors?
both are different. Conductors and good conductors, both are different. If you want to, this is conductor, let's say this is conductor, right? Conductor and good conductor, both are different. गुड कंडक्टर इट मींस अच्छा चालक है कि नहीं, जो हाई कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम. गुड कंडक्टर इट मींस इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी हाई. दिस इज द आइडियल कंडीशंस. नाउ फॉर द गुड कंडक्टर द कंडक्टिविटी मस्ट बी इन्फिनिटी. इट मींस there are very high conductivity, and there is no any practical importance of this good conductor. But if you want to talk about the conductor, then this is conductor is nothing but having the highest conductivity, high conductivity, right? Let's say this is 10 is to power 5, 10 is to power 6, 10 is to power 7, such like that. So having the high conductivity is considered as a conducting medium, and having the ideal situation, having the conductivity is infinite, is considered as a perfectly conductor, or we can say here the good conductor, right? So that's the different types of the medium in which the waves are propagated. The waves are propagated. Now, same thing is here for the transmission line. For the different types of medium, so that there are four types of the medium, and this is nothing but free space, lossless dielectric, and this is lossy dielectrics, and this is nothing but good conductors. Free space, if sigma equal to 0, there are no losses because alpha equal to 0. Lossless dielectric, no losses, this is alpha equal to 0. So देखो lossless नाम से ही पता चल रहा है आपको, नहीं? That represent lossless, there is no any losses occurs in the mediums. So the free space having the no any losses, the lossless dielectric also having the no any losses, right? So there are two types of the conditions for the lossless. One is the parameters having the free space, and another parameter is your lossless dielectrics. Now come to the point for the transmission line case. Now for the transmission line case, if you want, for the transmission line case, let's say two-wire transmission line. Are you getting my point? I hope you will get my point. So two-wire transmission line. In this two-wire transmission line, let's say this is your one wire, right? Let's say this is another wire, and two wire is nothing but your parallel transmission line, right? Now, in this parallel transmission line, the one is considered as a source element. So if it is considered as a source element, then it is must be considered as a sink elements. Why this is source elements? You can also treat as a source element. So one is the source element, then another is considered as a sink elements. Why? क्योंकि अगर करंट आप फ्लो करना चाहते हैं, if you want to flow your current, then there must be one is the source, another is your sink elements. Let's say network elements. This is your voltage source V, and the resistance is R. Now, whatever the current is flowing through this circuit, the I is nothing but V upon R. So whatever the energy is delivered by this voltage source, whatever the power is delivered by this voltage source, that will be consumed by this resistance. That will be consumed by the resistance. So this element is considered as a source element, and this element is considered as a sink elements, right? So for proper network, if you want to conduct the proper network, then there must be one is the source elements and another is your sink elements. So same as it is in your two-wire transmission line. So in this two-wire transmission line, let's say the distance between them is S, and let's say the radius of this wire is R. Radius of this wire is R, right? Now इनसाइड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? सो ये एक पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन है. इस पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है, दैट्स द जेट नॉट. सो लेट्स से द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ दिस पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन इज जेट नॉट. सो जेट नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ टू वायर ट्रांसमिशन लाइन. Two-wire transmission line.
S, distance between them, distance between them, R, radius of the wire, radius of the wire. So the Z naught is equal to 120 upon under root epsilon R ln S by R, ln S by R. This is the characteristic impedance of the Z naught, right? Now see, कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम डिजाइन करते हैं, इफ यू वांट टू डिजाइन योर टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, देन फॉर द आइडियल सिचुएशंस the outer layer of the conductor is considered to be a perfectly conductor. This is infinity. So the conducting part, outer layer of this conductor is perfectly conductor, and the inside is perfectly dielectric. So sigma equal to 0. So epsilon equal to epsilon naught into epsilon r. This is perfectly dielectric. This is perfectly dielectric. And the outer source outer elements is considered as a perfectly conductor. Perfectly conductor. अब ध्यान से समझिएगा. If this is perfectly conductor, then there is no any impingement of any ray. अगर आप कोई भी अगर एक्सटर्नल रे की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल रे आया आपका, इस तरह से आया, तो जिस रेट से आया उसी रेट से ये दन से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, राइट? जिस रेट से आया उसी रेट से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहां पर इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, राइट? तो देयर इज नो एनी पेनिट्रेशन ऑफ द रे. सो दिस इज नथिंग बट हाईली कंडक्टर. अब किसी भी कंडक्टर सरफेस लीजिए, सर आप कोई भी कंडक्टर सरफेस लीजिए, मान लीजिए ये कंडक्टर सरफेस है आपका, लेट्स से दिस इज कंडक्टर सरफेस, लेट्स से दिस इज कंडक्टर, राइट? This is your conductor. Now there is a incoming ray. Let's say this is your incoming ray. कोई incoming ray आपका आ गया, किसी भी कंडक्टर के ऊपर incoming ray है आपका, ठीक है? So that incoming ray is equal to outgoing ray. That incoming ray equal to outgoing ray, right? It means what? There is no any penetration of the wave through that conductor surface. इस कंडक्टर सरफेस के थ्रू देयर इज नो एनी पेनिट्रेशन ऑफ द वेव. पेनिट्रेशन ऑफ द वेव इस कंडक्टर के थ्रू नहीं है, राइट? सो टू वायर ट्रांसमिशन लाइन का अगर हम आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, सो फॉर द आइडियल कंडीशंस द इनसाइड द मीडियम is considered as a perfectly dielectric and the outer surface is considered as a perfectly conducting medium, right? So why this is considered as a perfectly conductor? Because if you take this is perfectly conductor medium, perfectly conducting surface, then there is no any impingement of the any rays outer from the outer surface. It means there are no any losses. There are no any losses occurs inside your mediums. So the perfectly dielectric is considered inside the medium, and if you consider inside the medium is perfectly dielectric and perfectly dielectric जैसे consider किए, this becomes your lossless. This becomes your lossless, right? So this is the this is your inside the two wire transmission line and outer surface of the two wire transmission line, right? Now come to the point. This two wire transmission line is designed with respect to the design parameter of two wire transmission line is nothing but R, L, G and C, right? And this is your distributed parameter, not the lumped parameter, right? This is your distributed parameters. यहाँ पर आपका lumped parameter हम लेके नहीं चलते हैं. अब बोलोगे सर, what are the difference between lumped parameter and distributed parameters? If you want to calculate the network elements, so the network elements, let's say this is R, L, G and C. This is your network elements. Now from these network elements, G is nothing but conductance and this is 1 upon resistance, right? But for what? Lumped parameter, right? Let's say this is R equal to 20 ohm. This is lumped parameter.
But when we use in the transmission line, this R equal to 20 ohm per kilometer. It means what? This is your distributed. अब ट्रांसमिशन लाइन को आप क्या करेंगे सर? ट्रांसमिशन लाइन को तो कहीं ना कहीं आप उसको बिछाएंगे, आप कहीं ना कहीं उसको आप लगाएंगे ट्रांसमिशन लाइन को. तो जब ट्रांसमिशन लाइन को जब आप लगाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन को जब आप जो है एजुकेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन को, तो ट्रांसमिशन लाइन क्या करेगा? फ्रॉम सोर्स टू द सिंक देयर इज ए, this is nothing but one types of the wire. Transmission line is one types of the wire. So this is one types of the wire, and in which there is a propagation of the wave in terms of voltage and current. There is a propagation of wave in terms of voltage and current. Now, so your voltage and current will be distributed, and in which there are four elements R, L, G, and C, and this will define the characteristic of the wave formations in your transmission line, right? So these R, L, G, and C, this is nothing but in terms of किसके terms में होते हैं sir? This is in terms of what? Distributed parameters. So L is considered Henry per kilometer, that G considered mho per meter per kilometer, and C nothing but your आपका farad per kilometer, right? So this is called distributed parameters. क्या बोलेंगे इसको हम? Distributed parameters. So in actual transmission line, the looks like some. So in actual transmission line, looks like that. This is your actual transmission line, right? Now, देखिए यहाँ पर आपका कैसा है सर? So this is your two-wire parallel transmission line. Yes, this is cross-sectional type of transmission line, cross-sectional view, right? This is cross-sectional view. Cross-sectional view or two-wire transmission line, right? This is outer layer, this is inner layer, right? Now, this is two-wire parallel transmission line, coaxial line. This is your coaxial cable. This is called coaxial cable. या इसी को बोलेंगे हम coaxial transmission line. This is two-wire line. This is two-wire parallel transmission line, right? This is called planar line. In this planar line, there is two planes. दो plane है, plane of sheet है ना? Planar lines, ठीक है? And this is wire above the conducting plane. This is nothing but wire above the conducting plane. So this is considered as a conducting plane, and above the conducting plane there is a wire. There is a wire. So this is wire above the conducting plane, right? And this is microstrip line. This is your microstrip line. Microstrip line, right? So this is microstrip line. A microstrip line क्या है? Microstrip line. In this microstrip line, there is a strips between your two conductors. यहाँ पे strips का formation किया गया है, and this is nothing but length of the strip is very low. That's why this is called microstrip line. So these are the types of your transmission line, which is used for the transmission of the wave from source region to the destination region, right? Sorry. Now in this case, your information is transmitted in terms of voltage and current. Voltage and current. And as you know that summation of voltage equal to 0. किसमें करते हैं सर आप? For the KVL, Kirchhoff's voltage law. And summation of current equal to 0. किसमें करते हैं आप? Kirchhoff's current law. So there must be formation of series and shunt connection. Series and shunt connection, right? So if your parallel connection, for the parallel connection, there is a summation of the current. For your series connection, there is summation of your voltage. Now, the actual looks like there are four types of the elements to define your parallel wire transmission line or any wire transmission line such as coaxial line, right? Your planar line, right? So there are four parameters, and these parameters are nothing but R, L, G, and your C. These are the four parameters which is used to define your parallel wire transmission line. Now, come to the point. So in the parallel plane wave propagation, the phase velocity is what? 1 upon mu into epsilon, right? 1 upon under root mu upon epsilon. And the transmission line having the characteristic impedance of your air medium is what? Mu upon epsilon. This is nothing but 377 ohm. So ये कौन सा केसेस था? ये था आपका प्लेन वेव प्रोपगेशन का केस.
सेम एज इट इज यहाँ पर जब यूज करेंगे हम टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, then the LC is equal to mu into epsilon and G by C equal to sigma by epsilon. So that will replace, if you want to replace the LC equal to mu into epsilon and G by C equal to sigma by epsilon, then for that case the all parameters, the all equations of plane wave propagations becomes your transmission line, becomes your transmission line. So plane wave propagations के जितने भी equations हैं, all equations can be replaced with your LC equal to mu epsilon and G by C equal to sigma by epsilon, and that will be your set, right? Now come to the point. Now this is the distributed parameters, ये आपका distributed parameters है, and for this distributed parameters, this is resistance R, this is inductance L, this is used for the series connection, right? And this is G, but here G is not equal to 1 by R. Make sure here G is not equal to 1 by R. Why? Because this is distributed parameter. If this is lumped parameter, then you can write G equal to 1 by R. But this is not the lumped parameter. This is your distributed parameters. So for distributed parameters, here G is not equal to 1 by R. So make sure for the transmission line, here G is not equal to 1 by R. Now, whatever the losses present in this resistance, whatever the losses present in this resistance, that will be counterbalanced by with your inductance, by with your inductance. Same as it is, whatever your conductance parameter, what are the losses present in the conductance parameters, that will be counterbalanced with your capacitance, with your capacitance. That's why G and C is considered in your shunt connection and R and L considered in your series connections. So the actual parameters, मतलब inside the two-wire transmission line, there is a flow of the circuits, and this is the actual distributed parameter circuit of the two-wire transmission line, two-wire transmission line, right? In which one component, this is resistance, another is your inductance, this is your conductance, this is your capacitance, but all these parameters in terms of what? Distributed, not the lump. This is distributed, right? Now, as you know that Ohm's law, what's the Ohm's law? Ohm's law says V equal to IR. So this is useful for both. Either it will be distributed or it will be lumped parameter. हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं Ohm's law. But KVL and KCL only used for what? Lumped parameter. This is not applicable for distributed parameters, right? Now, if you want to calculate the parameters in terms of the voltage, in terms of the current, or if you want to judge what are the changes with respect to the voltage and with respect to the current, so there must be analysis of the circuit. So there must be required the analysis of this circuit, and to analyze this circuit, you should require the transmission line parameters R, L, G, and C, and also you should require the two types of the network parameters. This is nothing but two types of the methods to analyze these parameters, and this is nothing but your KVL and KCL, right? So you should require KVL and KCL. So KVL और KCL तभी applicable है आपके जब आप यहाँ पर आप यूज करेंगे कौन सा? लम्प्ड पैरामीटर, राइट? सो लम्प्ड पैरामीटर आपको बनाना पड़ेगा. So you should convert this distributed parameter into the lumped parameter. Why we convert the distributed parameter into the lumped parameter? Because if you convert the distributed into the lump, then you can apply the KVL and KCL for the further analysis of the circuit, right? So without analysis of this circuit, आप कैसे कर सकते हैं कि वोल्टेज के फॉर्म में है या करंट के फॉर्म में है, राइट? वोल्टेज के फॉर्म में है करंट या करंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है. In what way you can say? That's why to analyze this network. So to analyze this network, just convert into your distributed to the lumped parameter. So this is distributed. Now convert into lumped parameter.
राइट। अब देखिए, अगर लंप्ड पैरामीटर में आपने इसको कन्वर्ट किया, अगर आपने लंप्ड पैरामीटर में इसे कन्वर्ट किया है, तो देखिए लंप्ड पैरामीटर में जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो R है, L है, G है एंड C है। लेट्स से द del of z distance, and it is the very less distance, right? Now now your R will be becomes R into del z. Why? This is your distributed. Now this becomes your lumped parameters, right? So this is nothing but R upon del z. This is nothing but R के फॉर्म में हो गया. So you can say this R dash equal to R into del z. Now that's why these parameters are converted into your lumped parameters, right? So this is your lumped parameters. This is coaxial transmission line, जिसको अभी मैंने बताया. This is outer layer, this is inner layer, this is outer radius, inner radius, and this is load elements is RL. So your load elements is your RL, right? And this is your generator resistance RG. This is your generator voltage is VG, and this is your coaxial line having the length is L. Length is L, right? चलिए, so actual में जो आपका पैरामीटर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, this is your magnetic field, actual electric field and magnetic field. This is the direction of electric field and magnetic field, right? This is your clockwise or anti-clockwise, whatever the direction of. This is the magnetic field component and this is electric field component. So electric field is what? Electric field radially outward. Radially outward. So electric field is radially outward. Magnetic field. Magnetic field forms the loop. Magnetic field forms the loop. So magnetic field forms the loop and electric field having the radially outward, right? So this is the electric field, this is your magnetic field. This is the direction of magnetic field and this is your direction of electric field, right? And this E cross H forms the plane and this plane is transmitted for the plane wave propagation. Now same as it is. Here we consider in terms of the voltage and in terms of the current, right? So come to the point. Now this is your actual circuit of the transmission line. So this becomes your, this is your I into ZT, R into del Z. This becomes lump because R is here distributed. Now if you want to just, this is the length is considered del Z. This is your Z. So this becomes Z plus del Z, right? तो यहाँ पर क्या बन गया सर आपका R into del Z. L किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? L into del Z में, ठीक है? यहाँ पर आ गया मैंने I करंट हुआ Z प्लस डेल Z एंड टाइम t के लिए, ठीक है? चलिए कंडक्टेंस भी क्या बन गया? G इंटू डेल Z और कैपेसिटेंस भी बन गया क्या? C इंटू डेल Z बन गया, ठीक है? और यहीं से आप लगाओगे एक बार KVL और एक बार क्या लगाओगे सर आप? KCL, ठीक है? चलो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए. चलिए, दिस इज योर resistance R into del Z. This is your inductance L into del Z. This is parallel combinations. This is G into del Z. This is the capacitance C into del Z. And let's say this is the point Z plus del Z, time is t, and this is Z into t, right? This is towards the generator, जहाँ से आप generate कर रहे हैं, towards the generator, and this will go towards the load, right? चलिए, यहाँ का पोटेंशियल जो है मैंने मान लिया VZT और यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया VZ plus del Z into t. So length change is del Z, and let's say very small time, so time is considered approximately equal to same. So the source time is approximately equal to destination times, right? Now this circuit becomes your what? This circuit your becomes lumped network. Lumped network. So you can apply the KVL and KCL. KVL and KCL आप अप्लाई कर सकते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड में हम नहीं कर सकते, राइट? चलिए, लेट्स से दिस करंट इज I into ZT and this current is I Z plus del Z into T. मान लीजिए ये करंट आपका क्या है?
आई इंटू जेड प्लस डेल जेड इंटू टी आई। ठीक है, चलिए मान लिया दिस करंट इज डेल आई, दिस करंट इज डेल आई, डेल आई। नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई द केसीएल, सर क्या लगा रहे हैं आप? केसीएल, या आप लगाइए सबसे पहले केवीएल। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं लेट v इक्वल टू v, if your v in the form of phasor form, इसके फॉर्म में है सर phasor form, so if your v is the form of phasor form, so having its magnitude and its phase, so let's say this is j51, I is also can be right here having the magnitude and its phase, this is j5, so this is your voltage and this is your current, right? चलिए, now this voltage and this current which is in the form of the phasor form, so you can write here this v equal to cos phi plus j sin phi, e raised to power j phi is cos phi plus j sin phi, e raised to power j phi is cos phi plus j sin phi, you can write here. Now apply the KVL. Now if you want to apply this KVL, so what's the KVL? Now in this case अगर आप इस केस में हार्मोनिक फंक्शन बनाना चाहते हैं, to make harmonically varying function, if you want to make harmonically varying function, then what says this v is nothing but mod of v e raised to power j phi into e raised to power j omega t. Now the dv by dt we can write here j omega into v, j omega into v, and di by dt also can be write j omega into I. So now same as it is. So here the vzt equal to r into del z I जेड टी प्लस एल इंटू एल क्या हो जाएगा सर? जे ओमेगा एल, राइट? जे ओमेगा एल इंटू डेल जेड इंटू आई जेड टी, राइट? प्लस यहाँ का पोटेंशियल कितना है? वी जेड प्लस डेल जेड इंटू टी. सो नाउ यू कैन राइट हियर वी जेड प्लस डेल जेड टी माइनस वी जेड टी अपॉन डेल जेड is equal to r plus j omega l minus into I into कितना? I. So I z t nothing but I. So I z t मतलब harmonically varying field, right? Now take यहाँ पर अगर आप दोनों साइड ले लें, I क्या था? Z into t. Now take here limit z del z tends to 0. Now here let's say this is z plus del z, so this is del z tends to 0, then this becomes your circuit becomes, this is nothing but your differential equations. और यहीं पर आपका क्या डेरिवेटिव फॉर्म का है, मतलब ये क्या हो गया? dv upon dt, so dv upon dz, dv upon dz, this becomes dv upon dz. So you can also write directly dv by dz equal to minus r plus j omega l into I, into कितना? I. Now if you want to differentiate it, so d2v by dz square equal to minus r plus j omega l, this is I z t, this is d I z t into dz, right? Now again जब आप लगाएंगे KCL, again if you write KCL, अगर आप KCL लगाए यहाँ पर, then the dIzt becomes upon dz becomes minus g plus j omega c into vzt, right? Now put here, जब इसको आप पुट करेंगे, then your circuit becomes d2 upon dz square equal to r plus j omega l into g plus j omega c into v. So this is nothing but your equation of the wave, equation of the wave किसमें? In the transmission line, in the transmission line. So this is your equation of the wave in your transmission line, right? Now this becomes, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d2v upon dz square equal to gamma square into v. So you can write here the gamma square equal to r plus j omega l into g plus j omega c. So the gamma is equal to
wave propagation constant. This is called wave propagation constant, and this is nothing but your propagation constant, right? So the gamma can be right here under root r plus j omega l into g plus j omega c. So the propagation having the two parameters, right? So why having the two parameters? आप ऐसे एक एग्जांपल समझिए, आपने यहां से जो है टॉर्च है ना, एक टॉर्च लीजिए, लाइट ऑफ सोर्स लीजिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है आपका, दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट, राइट? नाउ ये दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट. नाउ दिस इज द डिस्टेंस having the object is here. Let's say this is object. Now another object having this one. Now another object having this one, right? अब लाइट इंटेंसिटी जो होगा, if you judge the light intensity, then maximum light intensity for the A, then B, then C. इसका मतलब क्या समझे कि जो लाइट इंटेंसिटी होगा, the light intensity of this torch will be maximum on the object A. So nearer the object, higher the intensity. Near the object, higher the intensity. So the actual phenomena of the waves is what? They are propagating and having the special characteristic of attenuation. वो प्रोपागेट भी करेगा और एटेन्यूएट भी करेगा, है ना? कोई भी देखिए ना, आप कोई भी वेव को प्रोपागेट कीजिए, अगर आप कोई भी वेव को प्रोपागेट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? प्रोपागेशन भी होगा एंड एटेन्यूएशन भी होगा वेव में. मतलब एम्पलीट्यूड या हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी. So amplitude or intensity of the wave is also decaying. Now come to the point. ये जो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया सर आपका कि गामा क्या है आपका? वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई द वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट हैविंग द टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड अल्फा, अनदर इज बीटा. बीटा इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट and alpha is called attenuation constant. This is called attenuation constant. This is called phase constant. So the gamma having the two parameters alpha plus j beta, and this is equal to under root r plus j omega l into g plus j omega c. Now if you want to relate with the real parts, so this equation having the two parts, one is the real part and another is your imaginary parts, right? So you can break this equation in two parts, one is the real, another is your imaginary. Now if you relate with the real parts, if you relate with real to real parts and imaginary to imaginary parts, then the imaginary parts will gives your phase constant. क्या देगा आपका? Phase constant. And alpha will gives your real part. This is nothing but attenuation constant. Attenuation constant. And this is your phase constant. This is your phase constant, right? So this is nothing but your phase constant. Phase constant. Phase constant, right? So this is your real part and this is your imaginary part, right? Now gamma having the two parts, one is attenuation, another is your phase constant. Now on the basis of this R, L, G and C, on the basis of R, L, G and C, R, L और G and C के बेसिस पे हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा और इन टर्म्स ऑफ द बीटा, राइट? सो योर वेव इक्वेशन इज बिकम्स d2v upon dz square equal to gamma square into v, gamma square into v. अभी अगर इस इक्वेशन को लिखें सर, देखिए तो इसको लिख सकते हैं d square minus gamma square into v equal to 0, d equal to plus minus gamma. Now this differential equations having the equation vz t equal to v naught plus e raised to power minus gamma z plus v0 minus e raised to power gamma z, right? Because there are two characteristics, one is your plus and one is your minus. So there are two roots, one is plus and minus, right? Now here z is positive, here z is positive, so kaha source to the destination, so this is positive z direction.
Here z is negative, so this is negative z direction, right? So this is your vzt, v0 plus e raised to power minus gamma z plus v0 minus e raised to power gamma z. This is negative z direction, this is positive z direction, right? Now another is your if you want in terms of the current, so the current equation also becomes zt equal to I0 plus e raised to power minus gamma z, and as you know that if this is the direction of the current is positive I, then this will be the direction of the current is minus I. So that's why here minus I0 minus e raised to power gamma z. So this is the negative direction, and this is gives your positive direction in terms of the current, here also in terms of your current, right? So this is in terms of your voltage, in terms of your current. So this is your equation of the voltage and current of the general equation इसका for the transmission line, right? Now come to the point. सर आप इस दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं, इस दोनों इक्वेशन में आपका टाइम वेरिंग इक्वेशन नहीं है, टाइम पे डिपेंडेंट कोई भी इक्वेशन नहीं है, टाइम पे कोई भी फंक्शन आपका डिपेंड नहीं कर रहा है। और आपको पता है कि अगर कोई भी वेव का फॉर्मेशन हुआ, अगर कोई भी वेव, इफ एनी वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देयर मस्ट बी चेंजेस इनटू, one is your position and another is your time taken, right? So there will be change in your position and there will be change in your time taken. So your wave must be function of the position and function of the time. But here this is all, this is for this is in terms of your position, this is also in terms of your position, but not in terms of time, not in terms of your time. So अगर टाइम में इसको आप रखना चाह रहे हैं, so for time dependent, it must be introduced, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, e raised to power j omega t. So for time dependent function it must be introduced e raised to power j omega t. Now vzt equal to, for positive v0 plus e raised to power minus gamma z e raised to power j omega t, right? Now take the real part, then this becomes v0 plus e raised to power minus alpha plus j beta z e raised to power j omega t. Now this becomes v0 plus e raised to power minus alpha z e raised to power j omega t minus beta z, right? So this becomes v0 plus e raised to power minus alpha z, this is cos of omega t minus beta z plus j sin omega t minus beta z, right? Now if you take the real part, if you take only real part, then this vzt becomes, this is v0 plus e raised to power minus alpha z cos of omega t minus beta z. So this is your voltage, this is your voltage. Now come to the point. Here positive z direction, this is for the positive z direction. Now here direction of propagation of wave is what? Positive, because here negative, so the wave propagation is positive z direction. So this is the propagation of the wave in the positive z directions, right? Now come to the current point. अगर हम करंट पॉइंट की बात करें, हम करंट का अगर इक्वेशन लिखें या नेगेटिव जेड डायरेक्शन का अगर इक्वेशन लिखें, then what becomes for negative z direction? For negative z direction, you can directly write the vzt equal to v0 minus e raised to power alpha z cos of omega t plus beta z, right? So this is the voltage equation for negative z direction. हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जो वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमेशा डिकेइंग कैरेक्टरिस्टिक होगी। हमेशा क्या होगा सर? आपका डिकेइंग कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्योंकि जब भी वेव आपका प्रोपेगेट करेगा, whenever your wave is propagating from one medium to another medium, or you can say one source point to another points, there must be a function of
the position and also the function of the time, because the nature of the wave is decaying. The nature of the wave is decaying if you want to increase the distance between the point A and point B, right? So the nature of wave is also decaying, always decaying. हमेशा उसका नेचर होता है डिके करने का, हमेशा उसका नेचर होगा हमेशा डिके करने का। इसलिए जो वेव की प्रॉपर्टी है वो आपके मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए, वेव्स का फॉर्मेशन हो गया, वेव आपका बन गया। तो वेव कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करेगा और वेव का कुछ ना कुछ अपना प्रोपगेशन कांस्टेंट होगा, राइट। तो ट्रांसमिशन लाइन लेके चल रहे हैं और आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम 4 पैरामीटर लेके चलते हैं और वो पैरामीटर कौन कौन से थे? आर, एल, जी एंड सी पैरामीटर्स। इसलिए हम यहाँ पे प्रोपगेशन कांस्टेंट, दैट्स द प्रोपगेशन कांस्टेंट, and the propagation constant is gamma equal to general formula r plus j omega l into g plus j omega c, and the general formula of characteristic impedance का जो जनरल फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट z नॉट इक्वल टू अंडर रूट r plus j omega l upon g plus j omega c. So this is the general formula of your z naught, right? Now come to the point, different types of the medium। जैसे वहां पर हम different type of medium प्लेन वेव प्रोपगेशंस का देखे थे, और प्लेन वेव प्रोपगेशंस का different types of medium क्या क्या था आपका? लॉसलेस मीडियम, एयर मीडियम, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कंडक्टिंग मीडियम। सेम एज इट इज हियर। फर्स्ट मीडियम इज नथिंग बट योर लॉसलेस मीडियम। कौन सा मीडियम है? लॉसलेस मीडियम, राइट। सो केस 1, फर्स्ट केस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, यहां पर लेके चलेंगे हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन होगा बट कैसा होगा? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होगा। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन मतलब जो लॉसेस प्रोवाइड करता है। अब आप बताइएगा लॉसेस कौन प्रोवाइड करेगा? पावर कंजप्शन कौन करेगा? या तो रेजिस्टेंस करेगा या तो कंडक्टेंस करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही पावर कंज्यूम करता है। और पावर कंजप्शन कितना होता है सर आपका? आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो आई स्क्वायर आर से पावर का कंजम्पशन होगा आपका, और इंडक्टेंस भी यहाँ पर क्या बना दिए हैं? लम्प्ड बना दिए हैं, क्योंकि लम्प्ड पैरामीटर बनाकर ही हम एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे? केवीएल एंड केसीएल का केस, ठीक है। सो फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन द आर मस्ट बी इक्वल टू 0, R must be equal to 0 and G also must be equal to 0. There is no any resistance, there is no any conductance, and from that point this is nothing but your lossless transmission line. Which types of transmission line? Lossless transmission line, right? Now come to the point, put here lossless transmission line, put here lossless transmission line. So this becomes gamma equal to alpha plus j beta, this is equal to j omega into L into j omega into C. So you can write here 0 plus j omega under root LC, under root LC. So this is your gamma equal to alpha plus j beta, alpha plus j beta, right? So now from that point what becomes? Alpha equal to 0 Napier per meter, this is the unit, and beta becomes your omega under root LC, क्या? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, राइट। सो अल्फा इक्वल टू 0 नेपियर पर मीटर एंड बीटा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एलसी, दिस इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यही है आपका अल्फा एंड वही है आपका बीटा सर, किसके लिए? लॉसलेस के लिए। अब देखो जब अल्फा का वैल्यू 0 हो गया, अल्फा का वैल्यू 0 हो गया, इफ यू पुट हियर अल्फा इक्वल टू 0 दिस बिकम्स 1, if you put here alpha equal to 0 this becomes 1. So there is no any losses, there is no any attenuation. So in this transmission line, in this lossless transmission line, if it is lossless, this is your transmission line, it is lossless. So for the lossless transmission line, whatever your input wave, that will be transmitted, that will be your transmitted. That is for that case there is no any losses occurs, यहाँ पर कोई भी losses नहीं है,
मतलब इनसाइड द पॉइंट कोई लॉसेस ऑकर नहीं हो रहा है, कोई भी लॉसेस यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो जैसा इनपुट दिया आपने वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। सो वट एवर योर इनपुट्स दैट विल बी इक्वल टू योर आउटपुट्स, एंड दिस इज नथिंग बट योर केस ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन, राइट। कौन सा केस आपका सर? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब लॉसेस नहीं हुए ट्रांसमिशन लाइन में, कोई तरह का लॉसेस नहीं हो रहा है। जो इनपुट पावर है वही आपका आउटपुट पावर है। कोई भी ट्रांसमिशन लाइन पावर को कंज्यूम नहीं कर रहा है। क्यों पावर को कंज्यूम नहीं किया? बिकॉज यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दिए हैं? जीरो कर दिए। क्या कर दिया सर? आपका जीरो कर दिए। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। इट मींस देयर आर no any losses occurs inside your waves, inside your transmission line, inside your medium, कोई भी losses नहीं है, राइट। चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा, आपको एंजॉय कर रहे होंगे चीजों को, है ना। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि आप जो भी है, जो भी स्ट्रीमिंग में आप सुन रहे हैं, आप उसको सिर्फ सुनते चले जाइए, समझते चले जाइए, राइट। क्योंकि आपको भी लिखना तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ और चीजों को समझाते चले जा रहा हूँ। ये 2 घंटे को मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सो आई वांट टू मैक्सिमम यूटिलाइज दिस टाइम 2 hours so that the maximum benefited, the maximum you can benefit it. And the parameters which is used in this case is nothing but R, L, G and C. So on the basis of these R, L, G and C, also you can write the characteristic impedance. क्या लिखेंगे सर आप? Characteristic impedance. Now, what's the characteristic impedance? This is nothing but your Z naught, and this is equal to R plus J omega L upon G plus J omega C. Now, for lossless line, what becomes? R equal to 0, G equal to 0, so Z naught becomes under root L by C. So Z naught becomes under root L by C, and this is nothing but your characteristic impedance. That's the characteristic impedance. यही आपका क्या है? Characteristic impedance है। किसके लिए? Lossless transmission line के लिए। किसके लिए सर? Lossless transmission line के लिए। Now come to the point. Another cases. Let's say lossy dielectric. Let's say case 2. Lossy dielectric. In the lossy dielectric, there is present of R, L, G and C. सारा टर्म आपके प्रेजेंट होंगे आपके, है ना। सो अल्फा प्लस जे बीटा बिकम्स अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी. You can write here alpha plus j beta equal to, this is equal to rg, right, and this is minus omega square l into c plus j omega into rc plus gl, rc plus gl. दिस इज अल्फा प्लस जे बीटा. अब दोनों साइड इक्वेशन को मैग्नीट्यूड लीजिए. नाउ टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स. सो मैग्नीट्यूड जैसे लेंगे आप, क्या पे बनेगा आपका अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट दिस बिकम्स योर आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, नहीं एल सी, आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर सी प्लस जी एल का होल स्क्वायर. So this is your first equation. Now squaring both sides, this is alpha square plus beta square. This becomes under root rg minus omega square lc का whole square, omega square rc plus gl का whole square. This is your equation number 2. Now squaring both sides of equation number 1. Equation number 1 को क्या कीजिए आप? स्क्वायर कीजिए दोनों साइड. Then this becomes alpha plus j beta का whole square, rc rg minus omega square lc plus j ओमेगा आर सी प्लस जी एल. ठीक है, ये बन जाएगा आपका. ठीक है, स्क्वायर कर दिए दोनों ने. दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2j अल्फा बीटा इक्वल टू आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस जे ओमेगा आर सी प्लस जी एल. ठीक है,
चलिए, नाउ इन दिस केस equating both side, alpha square minus beta square equal to what? Rg minus omega square Lc. So this is your equation number third, right? So this is alpha square plus beta square. This is alpha square minus beta square. Now adding equation number three, equation number two plus equation number three. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? अल्फा स्क्वायर, ठीक है। दैट यहां से आ जाएगा आपको अल्फा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2. दिस इज अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1. दिस इज योर अल्फा, राइट? नाउ बीटा इक्वल टू, बीटा बिकम्स ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2. दिस इज अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1. दिस इज योर बीटा, राइट? तो दिस विल योर अल्फा, दिस विल योर बीटा. तो ये कैसे निकाले आप? लॉसी डायलेक्ट्रिक के केस में एक बार मैग्नीट्यूड ले लीजिए और एक बार स्क्वायरिंग कर दीजिए. दोनों को करने के बाद अल्फा और बीटा का वैल्यू, ठीक है? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको सबको, है ना? थोड़ा सा बोरिंग फील नहीं करें अपने आप को, है ना? अच्छा फील करें, क्योंकि ये मैराथन सीरीज चल रहा है, मतलब जितना फास्ट में आपको फास्ट यहाँ पे लर्न करना है ये टॉपिक्स को, है ना? इसलिए फास्ट में पढ़ा रहा हूँ. तो स्लो भी पढ़ा सकता हूँ मैं, 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी टेंशन ना लीजिए आप. आई कैन टीच दिस. सो हियर अल्फा एंड बीटा दोनों आपका निकल गया है ना. सो दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज केस थर्ड. दिस इज distortionless line. So a line is said to be distortionless if the condition is RC equal to GL. That is R by L equal to G by C. So if R by L equal to G by C, then this condition is called distortionless line. क्या बोलेंगे इसको हम? Distortionless line, right? जैसे for example, this is your condition of distortionless line. This is your condition of distortionless line, right? Distortionless line, RC equal to GL or R by L equal to G by C. So a signal normally consists of a band of frequency. एक सिग्नल क्या करता है? बहुत सारे बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को रखता है. Wave amplitude of different frequency components will be attenuated differently in a lossless line. जो वेव कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी का, वो एटनुएट करेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, डिफरेंटली आपका एटनुएट करना स्टार्ट करेगा, राइट? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स विल बी एटनुएटेड डिफरेंटली इन ये लॉसी लाइन एज अल्फा इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंड दिस रिजल्ट्स इन द डिस्टॉर्शन. अगर अल्फा आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है तो क्या करेगा? डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि एटनुएशन होगा आपका वेव का. So your distortionless line is one in which the attenuation constant alpha is frequency independent. अल्फा को क्या बोलना है आपको? फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाना है. अल्फा को क्या करना है? फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बनाना है. एंड बीटा को क्या करना है? लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा फेज कांस्टेंट बनाना है. एंड independent while the phase constant beta is linear dependent on frequency. बीटा को यहाँ पर क्या करना है? मुझे लीनियर डिपेंडेंट फंक्शन बनाना है. मतलब ओमेगा ओमेगा का जो केस है, इसका मतलब ये है आपका कि जो फेज कांस्टेंट है वो लीनियरली डिपेंड करेगा किस पे? बीटा पे डिपेंड करेगा आपका, राइट? दैट्स द बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा अंडर रूट एलसी. सो इस कंडीशन को अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस कंडीशन, we consider here RC equal to GL and this is nothing but R by L equal to G by C. समझे? इसलिए इस कंडीशन को हम एज्यूम करते हैं. Now come to the point.
Now, so for distortionless line, R by L equal to G by C. Now, what's the alpha? This alpha plus J beta equal to R plus J omega L G plus J omega C. So this is alpha plus J beta equal to, this becomes R plus J omega L into G. G is nothing but RC by L plus J omega into C. ठीक है, चलिए यहां से आपको अल्फा निकालना है और क्या निकालना है आपको, बीटा. कैसे निकालेंगे यहां से देखिए ध्यान से. सो योर अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू आरसी इक्वल टू जीएल का कंडीशन लिखिए. This becomes R square C by L plus J omega RC plus RC J omega L सेकेंड कैंसिल हो जाएगा. So this is J omega into RC minus omega square. ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट आप लिखो, इतना करने की जरूरत है नहीं. इसको और शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो आप. देखिए अल्फा प्लस जे बीटा था आपका, यहाँ से क्या कीजिए, अल्फा प्लस जे बीटा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर, और यहाँ से जी कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस जे ओमेगा सी बाय जी. ठीक है, और यहाँ से जी कितना था आपका, आर सी बाय जी इक्वल टू व्हाट, यहाँ से जी निकालिए, आर सी इक्वल टू जी एल, तो जी इक्वल टू आर सी बाय एल, राइट. दिस बिकम्स RG 1 plus J omega L by R. This is 1 plus J omega C. G is RC by L. C से C cancel हो गया आपका. So this becomes under root RG into 1 plus J omega L by R. And this is equal to alpha plus J beta. अब रियल को रियल के साथ इक्वेट करो. Then your alpha becomes under root RG and beta becomes omega under root MC. इसका मतलब क्या समझे आप कि अल्फा जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड बीटा आपका क्या है, फेज कांस्टेंट के इक्वल है. नहीं, किसके इक्वल है आपका, फेज कांस्टेंट. दिस इज लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज कॉल्ड बीटा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एलसी एंड अल्फा इक्वल टू अंडर रूट आरजी. क्या, नेपियर पर मीटर. So this is nothing but your Napier per unit. Units of Napier per unit per meter. This is radian per second. Now, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे फेज वेलोसिटी. So the phase velocity VP equal to VP जो होगा, this is nothing but omega by beta. This is 1 upon under root MC. क्या, meter per second. So this is called phase velocity. क्या बोलेंगे सर इसको हम, phase velocity. So that's called phase velocity, right? Now, so alpha is independent of frequency, beta is linear function of the frequency, और ये दोनों आपको डिफाइन किए गए हैं किसके लिए, ताकि आपका डिस्टोर्शन लेस लाइन बन जाए. क्या बन जाए सर आपका, डिस्टोर्शन लेस लाइन. So to make the distortion-less line, alpha makes the independent of the frequency and beta makes the linear function of the frequency. To make this condition, the time constant of RC and GL network will be same, and that's why the condition here we assume the RC equal to GL. So if RC equal to GL, then your transmission line becomes your distortion-less transmission line. Which types of transmission line? Distortion-less transmission line. RC equal to 4G conditions, right? That's the distortion-less transmission line. Now come to the point. कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट क्वेश्चन करते हैं कुछ, है ना, बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग. चलिए, so this is some basic type of questions.
कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या हो जाएगा डिस्टॉर्शन लाइन का, जेड नॉट इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी और अंडर रूट आर बाई, ठीक है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। पुट करके देखना आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है ए एयरलाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ 70 ओम। एयरलाइन कैसा है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या है 70 ओम एंड फेज कांस्टेंट इज 3 रेडियन पर मीटर एट कितना फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज। कह रहा है कैलकुलेट इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर यूनिट मीटर। इंडक्टेंस बताइए एंड कैपेसिटेंस बताइए पर मीटर ऑफ कलर। ठीक है, सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है आपका। तो दिस विल बी आंसर ऑफ कैपेसिटेंस, दिस विल बी आंसर ऑफ इंडक्टेंस। कैसे आएगा देखो ध्यान से। फेज कांस्टेंट मतलब बीटा दिया है, बीटा कितना दिया सर 3, सो बीटा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी, ठीक। और जेड नॉट क्या था अंडर रूट एल बाई सी, सो बीटा इंटू जेड नॉट, अगर बीटा स्क्वायर करो आप तो क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी, एंड जेड नॉट स्क्वायर करो आप तो क्या बनेगा एल बाई सी, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू एल से एल, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। नाउ योर एल बिकम्स, यहाँ पर एल का वैल्यू आ जाएगा आपका एल इक्वल टू बीटा जेड डॉट बाई ओमेगा, बीटा जेड डॉट बाई ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई। जब इसको आप पुट करेंगे बीटा दिया हुआ कितना आपको 3, ठीक है, जेड डॉट कितना दिया आपको 70, जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 334.2 नैनो हेनरी पर मीटर, ठीक है, पुट करके देखिए आ जाएगा आंसर आपका। अब जब L पता चल गया तो आप यहाँ से देखिए L पता चल गया, इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो क्या होगा 70 इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी, सो 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी, एल बाई सी एल बाई सी, सो सी इक्वल टू सी आपका आ जाएगा एल बाई 70 का स्क्वायर, एल बाई 70 का स्क्वायर, राइट, सो योर सी बिकम्स एल बाई 70 का स्क्वायर। एल क्या था आपका, एल कितना है आपका, एल आपका दिया हुआ है कितना 334.2 नैनो हेनरी पर मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा 68.2 पिकोफैराड पर मीटर। सो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन था आपका जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। Now come to the second question. Anyone? Please solve this question. ये ट्रांसमिशन लाइन operate at frequency 500 megahertz. Frequency you have to given frequency 500 megahertz. Z naught 80 ohm. Alpha 0.04 ampere per meter. Right? Beta 1.5 radian per meter. R L G and C का वैल्यू बताइए। So what are the value of R, L, G and C? ये चारों पॉइंट का वैल्यू बताइए, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप इसको, निकालने की कोशिश कीजिए आप। प्लीज सॉल्व दिस पैरामीटर। कैसे सॉल्व करेंगे आप, अल्फा भी दिया हुआ है आपको, बीटा भी दिया हुआ है आपको, है ना। चलिए ये कौन सा केस है, जनरल केसेस है, कौन सा केस है आपका जनरल, जनरल केस जो आपको बताए थे, क्या बताया था मैंने, ध्यान से देखिएगा। जनरल केस का जो क्वेश्चन बताया था तो क्या था आपका, अल्फा इक्वल टू क्या बताए थे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1, और अल्फा। बीटा क्या था आपका ओमेगा अंडर रूट बी एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस 1, राइट। चलिए इसको आप अप्रोक्सीमेट ये भी लिख सकते हैं,
अल्फा को आप अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट सिग्मा बाई 2 अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन, and beta you can write omega under root LC, right? Now this equation is used here and you can find the whatever the parameters. So the question is, in this question you have to given the parameters. चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है सर, देखिए now in this question transmission line operating at 500 megahertz, so your operating frequency is 5 megahertz, so 500 मेगाहर्ट्ज एंड अल्फा दिया हुआ आपको, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए अल्फा इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ले लो तो सिग्मा बाई 2 अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा बाई 2 अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन, ये अल्फा आपको दिया हुआ है, यहां से आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस जे बीटा का आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। एंड व्हाट्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ जेड नॉट, आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका अल्फा से, ये आपका अल्फा हो गया, अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करना, सिग्मा और म्यू एप्सिलॉन में एक यहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा अगर बीटा का वैल्यू अगर हम रखते हैं, बीटा इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी, यहाँ पर देखो एल और सी में एक और इक्वेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, एल और सी में एक और इक्वेशन आपको मिल गया, ओमेगा कितना दिया हुआ आपको 2 पाई into f, 2 pi into f, that's the frequency component, right? So here the frequency is given what, 500 megahertz, so you have to given the frequency is 500 megahertz, just put and you can find the R, L, G and C value, so that's the very very important and very easy question. चलिए अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, आर हो गया आपका, एल हो गया, जी हो गया, सी हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर, आर इक्वल टू 3.2 ओम पर मीटर, एल इक्वल टू 38.2 नैनो हेनरी एंड जी इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 47 per meter and c equal to 5.97 picofarad per meter. That's the very very important question and very easy questions, right? Now come to the next topic, input impedance, VSWR and the power, calculation of the power. चलिए अब इसको देखेंगे हम लोग सबसे पहले, calculation of input impedance. This is your transmission line. Let's say this is transmission line. The length of the transmission line is L, and the elements is, this is ZL, load elements. Let's say Z dot. Z dot is characteristic impedance. So Z dot is characteristic impedance. ZL is load impedance, right? Let's say beta is your phase constant. So electrical network, beta L, right? So here L in terms of lambda and beta आपको पता है क्या, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फेज मिल जाएगा आपको कितना, बीटा एल। चलिए दिस इज योर जनरेटर इम्पीडेंस ZG and this is your generator voltage VG, right? Now you have to find the input impedance here, this is Z input impedance.
So there are two types of the formula. I have already derived the voltage source V equal to V0 plus e raised to power minus gamma z plus V0 minus e raised to power gamma z, right? And the current is what? V0 plus upon z dot e raised to power minus gamma z minus V0 minus upon z dot, this is e raised to power gamma z, because this is called I dot and this is called I0 minus. Now input impedance Z is equal to V by I ratio. V by I ratio. Now assume here lossless transmission line, so alpha equal to what? 0. So alpha equal to 0, then gamma becomes your J beta. So for alpha equal to 0, gamma becomes J beta. तो गामा का वैल्यू कितना हो गया आपका? J बीटा हो गया। किसके लिए? जब अल्फा का वैल्यू कितना है आपका? 0. So your input impedance is nothing but V by I ratio. V by I ratio. This will give your input impedance. Now, so Z in equal to V by I ratio, and this will becomes Z in equal to आ जाएगा आपका Z dot into ZL plus JZ dot tan beta L upon Z dot plus JZL tan beta L. This is equal to V by I ratio. V by I ratio. So this is your input impedance. This is your input impedance, right? जिसमें Z in का वैल्यू आ गया कितना? V by I, that is voltage upon current, and यहाँ पर जो इक्वेशन बन गया Z dot into ZL plus JZ dot tan beta L upon Z dot plus JZL tan beta L. This is the equation of the input impedance, and that's the very very important. बहुत ही important आपका input impedance है, जिससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. So this is your equation of your input impedance here, right? Now, if you want to change the value of ZL, then there will be change in the value of your Zin input impedance. So case one, first case, first case. This is called short circuit impedance. So short circuit impedance is nothing but ZSC. So for short circuit impedance, short circuit की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है? ZL tends to कितना है सर आपका? ZL tends to 0. For short circuit impedance, ZL tends to 0. Now if ZL tends to 0, then Zin becomes JZ dot tan beta L. This is called ZSC, short circuit impedance. So your short circuit impedance becomes JZ dot tan beta L. Case 2. Open circuit impedance. And for open circuit impedance, this is nothing but ZOC. And for ZOC, ZL tends to infinity. Now, open कब होगा? देखो, ओपन कब होगा? जब ZL को इन्फिनिटी कर दोगे. जब ZL को इन्फिनिटी करोगे आप, तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा. और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे हम इसको? ओपन सर्किट. अब जब ZL को जीरो कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स जीरो, मतलब ये शॉर्ट हो गया. तो इसको बोलेंगे, यहाँ पर जो इंपेडेंस दिखेगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस. जब ओपन था तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट इंपेडेंस. जब शॉर्ट हो गया तो इसको बोलेंगे क्या? शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस, राइट? सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस. ठीक है, आप देखो ध्यान से. सो फॉर ZL टेंड्स टू 0 and for ZL tends to infinity. For ZL tends to infinity, this becomes your ZOC. Now for ZOC equal to ZL tends to infinity, so you can put here this is ZL. So ZL को आप कॉमन लीजिए और यहाँ से भी नीचे ZL कॉमन लीजिए. This is ZL upon ZL कॉमन लेंगे आप, तो ये बन जाएगा 1 plus JZ naught by ZL tan beta L, और ये बन जाएगा आपका Z naught by ZL plus J tan beta L. ठीक है, ZL टेंड्स टू इंफिनिटी जब करेंगे आप, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 0, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 0. चलिए, ये बन जाएगा आपका 1 by J को माइनस J, दिस बिकम्स माइनस JZ नॉट cot beta L, cot beta L. So your equation becomes ZS equal to JZ naught tan beta L, and ZOC becomes minus JZ naught cot beta L. Now अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करें,
if you want to multiply these two equations, then becomes ZSC into ZOC equal to Z naught square. This is Z naught equal to under root ZSC into ZOC. So this is your characteristic impedance. This is your सो गाइज अगर आपको दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस और दिया हुआ ओपन सर्किट इंपेडेंस, और अगर आपसे पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस बताइए ट्रांसमिशन लाइन का, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ZSC into ZOC एंड दैट विल गिव्स योर शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस. क्या देगा आपको? शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस, और सॉरी ओपन सर्किट इंपेडेंस और शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस से रिलेटेड में Z नॉट का वैल्यू देगा एंड दिस Z नॉट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस. क्या बोलते हैं सर इसको हम? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, राइट. चलिए, now come to the point, what is the VSWR, voltage standing wave ratio, and what is the power calculations, right? चलिए अब ध्यान से देखिए. Let's say this is your transmission line. This is your ZL, this is your Z naught, right? And this is your ZG, this is your VG, and here the input impedance is Zin. Now your circuit becomes, this is ZG, this is Zin, and this is your VG. ठीक है. नाउ यहां पर जो पैरामीटर इसको बोलेंगे हम सोर्स इंपेडेंस, दिस इज V0 प्लस. सो बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल द V0 प्लस कैन बी राइट हियर Zin अपॉन Zin प्लस Zg इनटू कितना सर? Vg. लेट्स से दिस करंट इज I0 प्लस, so the I0 plus equal to Vg upon Zg plus Zin. So this current is nothing but your I0 plus. Now यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया लोड पोटेंशियल इज VL और यहाँ का पोटेंशियल कितना था आपका? V0 प्लस था, है ना. चलो, अगर आपको चाहिए पावर डिलीवर्ड, क्या चाहिए मुझे? पावर डिलीवर्ड या पावर ट्रांसमिटेड. तो पावर ट्रांसमिटेड कितना होगा? पावर ट्रांसमिटेड कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. सो द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट V क्या था आपका? V0 प्लस e टू पावर माइनस गामा z, ठीक है, प्लस V0 माइनस e टू पावर गामा z कोएफिशिएंट tau equal to V0 minus upon V0 plus at the load, and this is equal to ZL minus Z naught upon ZL plus Z naught. This is the reflection coefficient of the load. ठीक है. अब अगर लोड साइड से चलना स्टार्ट किए, मान लो दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन था आपका ये, ठीक है, ये ZL था आपका. चलो मान लिया ये टोटल डिस्टेंस था आपका Z, और ये मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस था L, और ये मैंने सोर्स साइड से चला Z डिस्टेंस. तो जब सोर्स साइड से चलिएगा आप Z डिस्टेंस, then from the load side is what? L minus Z distance. So from the load side is L minus Z distance. Let's say this is L dash distance, right? Let's say this is L dash distance. Now for that case, this is your input impedance Z. Now the reflection coefficient at any point from the load से कितना डिस्टेंस चला? L dash डिस्टेंस चला. सोर्स से कितना जड़ा? Z डिस्टेंस चला.
टोटल लेंथ अगर L है, अगर सोर्स से चला Z डिस्टेंस, तो लोड से कितना चला सर आपका L डैश डिस्टेंस चला. So the reflection coefficient at any point from the load is nothing but tau Z equal to tau L e raised to power minus 2j beta L dash, where L dash is the distance from the load. Distance from the load. So make sure क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, ये बल्ब दे दिया 3 मीटर, बोलेगा आपसे व्हाट आर द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फ्रॉम द लोड साइड ऑफ 1 मीटर. That is, what are the reflection coefficient? What is the reflection coefficient 1 meter from the load side? लोड साइड से 1 मीटर चलने पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? So what are the reflection coefficient from the line 1 meter? It means सोर्स साइड से कितना चले आप 2 मीटर चले हैं. अगर यहां से चले हैं 1 मीटर, मतलब सोर्स साइड से कितना चले आप सर 2 मीटर चले हैं, है कि नहीं? सो फ्रॉम द सोर्स साइड दिस इज नथिंग बट 2 मीटर. इफ 1 मीटर फ्रॉम द लोड साइड, so from the source side this is nothing but your 2 meter, right? So this is your reflection coefficient. इसी को बोलते हैं हम reflection coefficient. Now come to the point. So here voltage reflection coefficient. If you want to calculate current reflection coefficient, so the current reflection coefficient is the negative of voltage reflection coefficient. Negative of voltage reflection coefficient. So current reflection coefficient जो होगा वो just क्या होगा negative of voltage reflection coefficient. So you can write here the tau L equal to tau Li equal to minus of tau Lb है ना voltage reflection coefficient. So this is nothing but your load side पे Z dot minus ZL upon Z dot plus ZL. This is your current reflection coefficient. Now at any point Z क्या बन जाएगा L dash at any point L dash distance from the load is tau Li raised to power minus 2j beta into L dash, where L dash is what distance from the load. Distance from the load. ठीक है. अब ध्यान से देखिए पावर का बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा. This is your Zg. Now this is Z dot. Now this is your Vg, right? And that potential across the Z dot is V dot plus. So the power at the input side, power at the source side, what's the power? The power input, let's say this is called power input, and you can say this is power input at the load, input at the source sides. So the P input is nothing but V0 plus का square upon 2Z dot, right? Why this is the maximum value, so VRMS square upon Z dot, this is called power input. Now what are the power transmitted? Let's say this is your transmission line, this is your ZL, this is your Z dot. So power reflected is what? Power reflected, power reflection coefficient. Power reflection coefficient is nothing but reflected power upon input power, and this is transmission coefficient or reflection coefficient का square. So the reflected coefficient upon PR upon P equal to reflection coefficient का square. So the reflected power is nothing but P in into reflection coefficient का square. So what are the transmitted power? This is your P input power. So what are the PT? PT transmitted power what? So PT is nothing but P input minus P reflected, right? टोटल पावर ट्रांसमिट कितना होगा, जितना आपने इनपुट पावर दिया उसमें से कुछ आपके रिफ्लेक्ट करेंगे, जस्ट माइनस द रिफ्लेक्टेड पावर and whatever the remaining power that will be transmitted through the load. So the transmitted power you can write the input power minus reflected power. So the transmitted power is equal to input power minus reflected power. So this can be right here PT equal to 1 minus P reflected upon P input, right? This is P input.
So you can write here Pt equal to V0 plus का square upon 2z dot. This becomes 1 minus reflection coefficient का square. And this is nothing but your transmitted power. This gives your transmitted power, right? तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा गेट में, तो गेट में ये मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ट्रांसमिटेड पावर बताइए. एंड ट्रांसमिटेड पावर आपसे पूछा जाएगा कभी भी, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बाय सीइंग द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, that is nothing but voltage reflection coefficient equal to ZL minus Z naught upon ZL plus Z naught, right? Now, after the voltage reflection coefficient, you should go to the transmitted power, and for the transmitted power, this is V0 plus the square upon 2Z naught into 1 minus reflection coefficient square, 1 minus reflection coefficient square, and this reflection coefficient is equal to ZL minus Z naught upon ZL plus Z naught, and always this value is less than 1. So always this value less than 1, it means the fraction of the power will be transmitted, and this is nothing but whatever the input powers and just minus the reflected power, and whatever the remaining power that will be transmitted through the load, right? That's why we can write here the transmitted power Pt equal to P input minus P reflected. P input minus P reflected, right? So this is the concept of the power. Now, come to the point of voltage reflection, VSWR. Now, what is VSWR? इसको बोलते हैं हम voltage standing wave ratio. So the voltage standing wave ratio. What says the voltage standing wave ratio? VSWR क्या है? इसको क्यों पढ़ते हैं? ठीक है? So VSWR is nothing but the ratio of maximum voltage to the minimum voltage. Maximum voltage to the minimum voltage, right? Let's say this is your load terminals. ध्यान से देखिएगा. Let's say this is your load terminals. Now it is terminated at the V minimum, right? You can also that like this. Now it is terminated at V maximum. So this is V maximum, this is V minimum. So V maximum is nothing but V0 plus 1 plus reflection coefficient. And V minimum is what? This is V0 plus 1 minus reflection coefficient. Now, VSWR equal to, this is S. VSWR को S से replace करते हैं. So the S equal to V max upon V minimum, and this is equal to 1 plus reflection coefficient upon 1 minus reflection coefficient. And as you know that the reflection coefficient will be lie from 0 to 1. इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच है? 0 से 1 के बीच में है. जब इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है आपका, so if reflection coefficient equal to 0, if reflection coefficient equal to 0, then VSWR equal to 1. If reflection coefficient equal to 1, then VSWR becomes infinity, right? So the VSWR, range of the VSWR is minimum 1 and maximum infinity. So here infinity is possible. That's why there is a equality sign about the infinite. Generally, there is no any equality sign in the infinite, but here infinity is possible because whenever reflection coefficient becomes 1, then in that case your VSWR becomes infinity. And for that case, we can find the VSWR range will be minimum is 1 and maximum is equal to infinite. So this is the range of the VSWR, and this is called voltage standing wave ratio. इसी को बोलेंगे हम voltage standing wave ratio. ठीक है? That's called VSWR. Now come to the other point. अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये आ गया V maximum और आ गया आपका क्या V minimum. So maximum to the minimum ratio. This is called VSWR.
Reflection coefficient is what? ZL minus Z naught upon ZL plus Z naught. If load terminal is greater than Z naught, then obvious है reflection coefficient is greater than 0. If ZL less than Z naught, the reflection coefficient is less than 0, right? So if ZL greater than Z naught, the reflection coefficient is positive. If ZL less than Z naught, the reflection coefficient is what? Negative. यहाँ पर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव आ जाएगा आपका, है ना? सो जब रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट आपका पॉजिटिव था, तो उस केसेस में the VSWR can be also write here directly ZL by Z naught. If negative, then VSWR can also write this is Z naught by ZL. जिस बड़ा में से छोटा को आप डिवाइड कर दीजिए, right? Whatever the greater here, greater is Z naught is greater than ZL. So just VSWR, because as you know that VSWR should be greater than 1. It should be greater than 1. So you can write here just ZL by Z naught is greater than 1. So here VSWR equal to ZL by Z naught. In that case, Z naught by ZL is greater than 1. So in that case, VSWR is Z naught by ZL. So you can also put up here Z naught by ZL directly. You can ZL by Z naught or Z naught by ZL. Or other method is VSWR equal to 1 plus reflection coefficient upon 1 minus reflection coefficient. So these are the three formulas which can be used to find the VSWR. VSWR निकालने के लिए ये तीनों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका. That's the very very important, right? Now come to the question. क्वेश्चन किस तरह से आपका पूछा जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे दिया गया है the characteristic of your equation. This is the question of the gate. Right? This is 4 and this is 2. ठीक है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है and Z naught, the characteristic impedance Z naught is 50 ohm. Now, what is the reflection coefficient and what is the ZL? ZL का वैल्यू क्या होगा and reflection coefficient की वैल्यू क्या होगा? ठीक है? So how we can solve this question? For this question, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, for this question, Z naught equal to what? 50 ohm. And ZL, we should require the ZL. So to find out the value of ZL, first of all, you should calculate the reflection coefficient, right? So to find the value of reflection coefficient, there is a magnitude mod value. So there will be possibility of two value. One is plus tau, and another is minus tau. So this is the load terminals, and it is terminated at the maximum value is 4. At the load terminal, it is terminated at the maximum conditions. It means what? In that case, ZL is greater than Z naught. Now, what's the VSWR? VSWR is nothing but V max upon V minimum. So what's the V max? 4. This is 4 and V minimum is what? 2. This is 2. This is equal to 2. So VSWR equal to 2. So this is 1 plus tau upon 1 minus tau is equal to 2. So the reflection coefficient is nothing but VSWR minus 1 upon VSWR plus 1. So the reflection coefficient is 2 minus 1 upon 2 plus 1, and this is 1 by 3. Now the reflection coefficient having the plus 1 by 3 or minus 1 by 3. Now in this case, ZL is greater than Z naught, so obvious है reflection coefficient will be plus 1 by 3. So now put up here 1 by 3 equal to ZL minus Z naught. Z naught is what? 50 ohm. This is ZL plus 50 ohm. So put here ZL plus 50 equal to 3 ZL minus 150, and this is equal to 200 equal to 2 ZL, and this is ZL equal to 100 ohm. Right? So for this equation, वैसा equation जिसका voltage static wave ratio का pattern V maximum upon V minimum का जो pattern है, V max by V minimum का जो pattern आपको given है, वो दिया हुआ है, अगर तो उसका हम VSWR निकाल करके रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल करके हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट आर द इंपेडेंस ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द लोड इंपेडेंस, राइट? So impedance of the transmission line you have to given here 50 ohm, and here we have to find
So what is the value of the load impedance? So here the load impedance is ZL is equal to 100 ohm. ZL is nothing but equal to 100 ohm. And that's the equation of the VSWR and characteristic impedance. Right? Now come to the point. So this becomes your power and this becomes your VSWR and this is your characteristic impedance, input impedance, right? Now come to the other points. Now input impedance at any point. You can find the input impedance at any point by removing what? Let's say Z in equal to Z dot ZL plus JZ dot tan beta L JZL tan beta L, right? यहाँ पर आप L का वैल्यू क्या पुट करते हैं? टोटल लेंथ पुट करते हैं. So here you have to put the value of the length, total length, nothing but your total length, right? Now also in this case, your value of the ZL is nothing but your total length. Now electrical length is what? Beta into L. Beta into L gives you electrical length. Now case 1. If L equal to lambda by 2, if L equal to lambda by 2, then beta L is what? Beta L is 2 pi by lambda into lambda by 2. So this becomes pi. So 10 pi equal to what? 0. So just put here 10 pi equal to 0. And whenever you put here 10 pi equal to 0, then your becomes Z is equal to Z dot ZL by Z dot. So Z is equal to ZL. So for L equal to lambda by 2, the characteristic impedance having the length is L equal to lambda by 2. मान लो ये ZL आपका है, ये Z dot है आपका, ठीक है? So Z becomes your ZL. Z becomes your ZL. Now another case. If L equal to lambda by 4, this is called quarter wave transformer. इसी को बोलते हैं quarter wave transformer भी, ठीक है? So if your L equal to lambda by 4, this is your transmission line having the length is L equal to lambda by 4, right? Now this is your ZL elements, this is your Z dot elements. Now beta L is what? 2 pi by lambda into lambda by 4, this becomes your pi by 2. So tan beta L equal to infinity. So 10 pi by 2 is equal to infinity. Now Z becomes your Z dot, right? ZL plus JZ dot tan beta L Z dot plus JZL tan beta L. Tan beta L कॉमन लीजिए, Z dot into tan beta L. This becomes your ZL by tan beta L plus JZ dot. Now नीचे से भी tan beta L कॉमन लीजिए. This becomes Z dot by tan beta L plus J times of ZL. खत्म. And देखो tan beta L tends to infinity, so this becomes your 0, and this also becomes your 0, right? So the Z in equal to Z dot into JZ dot by JZL. J से J cancel out हो गया. So Z in becomes Z dot square by ZL. So the input impedance of the quarter wave transformer Z in becomes Z dot square by ZL. Very very important है ना. इसी को हम यूज करेंगे क्वार्टर वेव मैचिंग ट्रांसफार्मर के लिए भी यूज किया जाता है. That's the very very important. Now come to the point. For L equal to lambda, for L equal to lambda again और 3 lambda by 2 again, सारे पोर्शंस के लिए आपको हो जाएगी. आपको क्लियर है क्या? तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ L के लिए आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, जैसे tan बीटा L, और tan बीटा L में अगर हम बात करें ZSC की, तो ZSC क्या था? JZ डॉट tan बीटा L. ZOC क्या था आपका? माइनस JZ डॉट cot बीटा L, राइट? So ZSC is nothing but JZ dot tan beta L
and ZOC is nothing but minus JZ dot cot beta L. Now for that case ZSC और ZOC दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से, एक है tan बीटा L, एक है cot बीटा L, दोनों केसेस आपका, एक है tan बीटा L, एक है कौन सा आपका cot बीटा L का केसेस है, ठीक है। तो tan बीटा L की अगर हम बात करें तो tan बीटा L पॉजिटिव होगा, किसके किसके बीच में पॉजिटिव होगा और किसके किसके बीच में नेगेटिव होगा, है ना। और अभी देख लिया मैंने कि एवरी लैम्डा बाय 2 पे कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर tan बीटा L पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, अगर tan बीटा L पॉजिटिव है then ZSC gives your what, inductive effect. Which effect? Inductive effect. Why? Because tan beta L positive, then this is J into Z naught, so this is nothing but inductive. Why? This is inductance, this is J omega L, so J is positive, so ZSC gives you an inductive effect. If cot beta L is less than 0, then ZOC gives you inductive effect, right? Inductive effect. Why? Because cot beta L is less than 0, that less than negative because positive and ZOC becomes your inductive effect. If tan beta L is less than 0, then ZSC gives your capacitive effect. कैसा देगा ये, कैपेसिटिव इफेक्ट देगा सर आपका, ठीक है। इफ cot beta L positive, then ZSC gives your capacitive effect. Which effect? Capacitive effect. So on the basis of this parameter, इस पैरामीटर पे हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं एंड इस ग्राफ को आप देखेंगे कि लैम्डा बाई 4 पे कितना हो गया था आपका, इन्फिनिटी हो गया था। लैम्डा बाई 4 पे कितना हो गया था सर आपका, इन्फिनिटी हो गया था। तो वही केसेस यहाँ पर भी हम अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो द ग्राफ इज नथिंग बट योर, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, राइट। नाउ इन दिस ग्राफ, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज योर कैपेसिटिव इफेक्ट। So for beta L, this is your beta L. So L equal to lambda by 4. So beta L equal to what? Pi by 2. So this is lambda by 4 length, this is lambda by 2 length, this is 3 lambda by 4 length, and this is your this is nothing but your lambda, right? Now this is inductive effect. Why? Because 0 to lambda by 4 के बीच में कभी भी रखेंगे आप. So for 0 to pi by 2, 10 beta L is positive, so this will give you inductive effect. Now for 0 to pi by 2, ZOC gives you capacitive effect. Why? Because negative impedance. So this is the case of ZOC and this is the case of, sorry, ZSC, this is ZSC and this is the case of ZOC, upper circuit conditions, right? Now again for lambda by L equal to lambda by 4 to lambda by 2. अब बोलोगे सर L equal to lambda by 4 पे क्या होगा? That is nothing but resonant circuit. कौन सा सर्किट? रेजोनेट सर्किट। अब रेजोनेट सर्किट में भी सीरीज रेजोनेट सर्किट, एल और सी का कॉम्बिनेशन, और बेबी आपका एल और सी का कॉम्बिनेशन क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, राइट। सो अगर इंपेडेंस आपका जीरो है, इफ योर इंपेडेंस इज जीरो, दैट एडमिटेंस इज व्हाट, इंफिनिटी। इफ योर एडमिटेंस इज जीरो, दैट इंपेडेंस इज व्हाट, इंफिनिटी। सो बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस, one condition is the series impedance, another is your parallel impedance, right? So at this is exact point, but if we lie between the L equal to lambda by 4 to lambda by 2, and in that case the ZSC gives your capacitive effect and ZOC gives your inductive effect, because cot beta L becomes negative and negative becomes your positive. So this is inductive, capacitive, inductive, capacitive, inductive, capacitive, capacitive, inductive, and capacitive, this is inductive, right? So you can write here, this is, अगर एक ही में ड्रॉ करना चाहते हैं, so you could draw like that. This is, you can draw like that, right? So this is your capacitive, so this is your ZSC, this is ZOC, this is ZOC, right? This is ZSC, this is ZOC, this is ZOC, ZSC, this is ZOC, right? This is ZSC. So एक ही पैरामीटर पे आप इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ विद द ओनली वन पैरामीटर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे मैंने ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक पार्ट आपका कवर किया है। ट्रांसमिशन लाइन को जस्ट आप जब स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, जितने फार्मूला ड्राइव किया गया है दैट फार्मूला उसको आप अच्छे से देखिए एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। एंड स्टूडेंट्स,
जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज पे आप लीजिए, टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चंस है ना, द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर गेट एग्जाम एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टेस्ट सीरीज, दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। सो यू कैन परचेज योर टेस्ट सीरीज फ्रॉम द गेट फॉरम, एंड गेट फॉरम के टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो टेस्ट सीरीज को लीजिए आप अच्छे तरीके से, एंड टेस्ट सीरीज में जो है टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। कभी भी क्वेश्चंस अगर आपको लगे कि कम हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। सो मेक्स योर प्रीवियस ईयर गेट एंड प्रीवियस ईयर आईईएस प्रीलिम्स, है ना, आईईएस मेंस 2, if you want to solve it, IES means 2, and the previous year gate and the test series paper, and test series paper is very very important, इसको आप जरूर दें। टेस्ट सीरीज से आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा, कहाँ गलती कर रहे हैं आप, है ना, किस तरह का एरर है आपका, किस तरह का मिस्टेक कर रहे हैं आप, उन सब चीजों पे आप जो है बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अपने टेस्ट सीरीज देने से आपको क्या होगा, जितने भी तरह की गलतियां हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं और एरर को कम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, हैप्पी रहें और अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंड के साथ काम करें, पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ाई करें, एंड अच्छे तरीके से आप जब पढ़ाई करेंगे अच्छा रैंक भी आएगा सर आपको, है ना। तो अच्छी रैंक अगर आपको लाना है तो दो चीज का ध्यान रखें आप, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, एंड दूसरी चीज आप जो ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। So at least solve 100 plus questions daily and practice more and more. Make sure जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एरर आपका उतना ही कम होगा आपका। So students do the practice as large as possible, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, है ना। खुश रहिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, है ना।